सबसे पहले एक डेफिनेशन है, द ब्लॉकचेन इज एन इनक्रप्टेबल डिजिटल लेजर ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू रिकॉर्ड नॉट जस्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बट वर्चुअली एवरीथिंग ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है जिसमें आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं, किसी भी किस्म की ट्रांजेक्शन्स को किया जा सकता है। एक और डेफिनेशन देखते हैं। इन द सिंपलेस्ट टर्म, blockchain is a time-stamped series of immutable record of data that is managed by cluster of computers not owned by any single entity. Each of these blocks of data are secured and bound to each other using cryptographic principle. यहाँ पे क्या कह रहा है कि blockchain एक immutable record है, time-stamped series of record है और हर ब्लॉक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें पूरे ब्लॉकचेन को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से ब्लॉकचेन काम करता है। To understand blockchain, let's go back to 500 AD on the island of Yap, located in what is now Micronesia. The Yapese people had stones like this everywhere. This is a Yapese coin. It was their money. It's about 200 kilos, so spending these like modern coins, that posed a bit of a problem. Well, the Yapese solved this by not ever physically moving the coins. The coins were placed in very visible locations on their tiny island. Every adult Yapese knew who the owner of each coin was by memory. When two people wanted to transact, they would announce the change in ownership to the other Yapese, who would all update their knowledge of whom the coin belonged to. Voila, the coin was exchanged. The Yapese were using what we would call a distributed ledger. It's a ledger in that each Yapese had a mental record of the ownership of all coins, and they would mentally update that ledger anytime there was a transaction. It's distributed in that the ledger wasn't just known by one person, it was known by all people. यहाँ पर आप देखें कि इस आइलैंड पे जो भी लोग हैं वो अपने कॉइन्स को मेंटली स्टोर कर रहे हैं और किसी एक बंदे के पास रिकॉर्ड नहीं है। आइलैंड में मौजूद तमाम लोगों के पास ये रिकॉर्ड मौजूद है कि उनके कॉइन कितने हैं, किसके पास कौन से कॉइन हैं, सब ने अपने जहन में इंफॉर्मेशन रखी हुई है। Now, the Yapese could have asked one person to keep track of the mental ledger of coins. That person would have to be really trustworthy in terms of both honesty and administration skills. The monopoly that person would have on transaction activity might lead them to charge a fee or make rules for who and when one can transact. And problems would arise if that person fell ill, decided to leave, or if their integrity was compromised in some way. That central person would be a bank. Distributed ledgers perform many bank-like functions without requiring trust in a central entity. In the Yapese example, a person can't tamper with the ledger and claim ownership of a stone that doesn't belong to him, lest all the Yapese come forward and contradict his claim based on their knowledge of the ledger. So fraudulent transactions aren't likely. Also, if one particular member of the tribe isn't available or moves away, thereby losing a copy of the ledger, transactions can still be validated by the other Yapese. So the system is fault resistant. Perhaps most interesting is what happens if a coin gets destroyed or lost. In one instance, a large stone fell overboard on the way back from the island where they quarry the stone. No problem, the other Yapese decided. We can imagine your coin sitting there in the ocean. We'll give you credit for it, and we will mentally use it for transactions like we do with the others. So even if for all practical purposes the coin doesn't even exist, they could still use it to transact. यहाँ पर जैसे इस वीडियो में हमने देखा कि अगर आइलैंड के लोग किसी एक बंदे को अपॉइंट कर दें कि वो सब के कॉइन्स की इन्फॉर्मेशन अपने पास रखे और उस इन्फॉर्मेशन को मैनेज करे, कौन ट्रांजैक्शन कर रहा है, कौन किसको बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर रहा है, वो अगर एक आदमी के पास हो तो वही प्रॉब्लम हो जाएगी जो इस वक्त हमारे है सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम के अंदर है कि वो बंदा अपने रूल्स बना सकता है, जिस तरह बैंक्स रूल्स बनाते हैं वो बंदा उसके फ़ीस चार्ज कर सकता है और वनरेबल है क्योंकि वो उसमें चेंजेस कर सकता है, रिकॉर्ड में अमेंडमेंट कर सकता है क्योंकि सेंट्रल बंदे के पास है। अगर ये चीज़ सेंट्रल एंटिटी के पास नहीं होगी, आइलैंड के तमाम लोगों के पास होगी, किसी एक के पास नहीं होगी, तो अगर एक बंदा, एक आइलैंड का बंदा
इसको चेंज करने की कोशिश करेगा, करप्ट करने की कोशिश करेगा, तो बाकी सारे लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। blockchain. यहाँ हमने देखा ब्लॉकचेन हैशिंग को एक्सटेंसिवली यूज़ करता है। हैशिंग मैकेनिज़्म एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें आप कोई स्ट्रिंग या कोई टेक्स्ट या पूरी बुक का कंटेंट पास करते हैं, उसके अगेंस्ट में वो एक फिक्स्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको रिटर्न करता है। इससे क्या होता है कि आप किसी भी तरह का इनपुट दें, अगर सेम इनपुट आप दोबारा देंगे तो उससे एग्जैक्टली सेम आउटपुट जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल मैं हेलो पास करता हूँ हैश फंक्शन में, तो उसका एक हैश कोड जनरेट होगा। अगर मैं 10 बार कहीं से भी दोबारा हेलो पास करूँगा हैश में, एग्जैक्टली सेम आउटपुट जनरेट होगा। लेकिन अगर उसमें एक डॉट, एक कॉमा, ज़रा सा भी चेंज आ जाए तो कंप्लीटली डिफरेंट हैश जनरेट होता है। यहाँ समझने की बात है, ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि एक डॉट चेंज हुआ है तो कोई हैश फंक्शन का कोई करैक्टर चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा हैश ही डिफरेंट जनरेट होता है और ये हैश इरिवर्सिबल है। आगे चल के हम इसको डिटेल में देखेंगे। First, though, let us go back to the idea of invisible coins. We know from the island example that a distributed ledger allows you to transact with coins, even if the underlying coins don't exist, just like the coin at the bottom of the ocean. We also saw how it is nearly impossible to steal coins. This was because each Yapese knows who owns a given coin and whether any transactions have changed that ownership. Now imagine that these ledgers, instead of being stored in people's heads, are stored in computers online around the world, managed by incentivized volunteers. It would still work just like with the island. Each computer would have a copy of the ledger showing coin ownership that's visible and known to everyone. Every time a person wanted to make a transaction, she would just announce to the computer network her intention to send coins to someone else. All those computers, upon hearing that announcement, would update their internal ledger by deducting a coin from her and adding a coin to the other person. We would only be missing 2 things to make this workable in the real world. First thing we're missing, we need a way to disguise the identities of people on the public ledger, since most of us aren't going to put our names and transaction history in public view. We can solve this with a hash function. Each person's identity details can be reduced to an unrecognizable 20-digit code, where only the owner knows the inputs required to generate the code, thus anonymizing participants. The second thing we'd be missing to make this workable is a way to quickly compare ledgers between computers, to make sure they're starting from the same version of the transaction record. We can also address this with a hash function. Each computer can turn its ledger, which is just computer text, into a 20-digit code and compare it with codes for ledgers on other computers. If the codes all agree, we know the ledgers are the same. If they're the same, it's likely they represent an accurate view of coin ownership. Implicitly, this makes it almost impossible to tamper with the ledger, because to do so, a person would have to tamper with 1,000 other ledger copies stored independently in computers around the world. अब हम देखते हैं जैसे आइलैंड पे लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर मेंटेन किया हुआ था अपने अपने जहन में, सब ने याद रखा हुआ है किसके पास कितने पैसे हैं। अगर उसी चीज़ को हम प्रोग्रामेटिकली सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कर दें और वो इन्फॉर्मेशन आइलैंड का जो हर बंदा है उसके बजाय आपके पास एक मशीन हो, एक कंप्यूटर हो जिसमें वो सॉफ्टवेयर मौजूद हो और तमाम नेटवर्क में जो मशीन है वो सॉफ्टवेयर चला रही हो और जो भी ट्रांजैक्शन हो, जो भी बिटकॉइन ट्रांसफ़र होता है वो उन तमाम मशीनों पर रिकॉर्ड हो, एग्जैक्टली वैसा ही जैसे कि इस आइलैंड पे हो रहा है। We've just invented Bitcoin, the digital currency we've all heard so much about. Bitcoin is a shared distributed ledger to transfer invisible coins. Anyone can join this ledger by creating a 20-digit coded identity and obtaining coins from some other users in a transaction. Those concepts, the distributed ledger coupled with hash functions, those together are often called blockchain, or sometimes just distributed ledger. The first blockchain was built to enable Bitcoin, but blockchain can be so much more. यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंट है, पब्लिक लेजर है, तो आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 4 बिटकॉइन है
तो कोई भी देख सकता है कि मेरे पास 4 बिटकॉइन है, मैं किसको कितने बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, कितने बिटकॉइन रिसीव कर रहा हूँ, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ कोई भी देख सकता है। इसका मतलब हमारी प्राइवेसी तो ख़त्म हो गई। ब्लॉकचेन का ऑब्जेक्टिव ट्रांसपेरेंट रखना इसलिए था कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो पब्लिक हों, लेकिन पर्सनल एनोनिमिटी, यूज़र कौन है उसको मेंटेन रखने के साथ साथ। इसलिए आपका ह्यूमन का जिसका भी वो अकाउंट होता है उसका भी एक बिटकॉइन का एड्रेस होता है, एक हैश एड्रेस होता है। उस एड्रेस से ये नहीं पता चलता कि ये ज़िशान का एड्रेस है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर एड्रेस ने दूसरे पर्टिकुलर एड्रेस पे कितने बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए। बस ट्रांसपेरेंट है सब कुछ, लेकिन प्राइवेसी ऐसे मेंटेन हो रही है कि हर चीज़ हैश कोड में मौजूद है। तो मेरा आईडी, आपका आईडी एक हैश फंक्शन है, मैं आपको बिटकॉइन भेजूंगा, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है और नज़र भी आ रहा है कि कितने बिटकॉइन ट्रांसफ़र हुए ए अकाउंट से बी अकाउंट में, लेकिन ए किसका है बी किसका है ये ब्लॉकचेन में मौजूद नहीं है।